was the essence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. From that essence, he created Imam Ali alayhi salatu wasalam. And from the essence of Imam Ali alayhi salatu wasalam, he created all of Imam Masumin alayhi salam. And from the essence of Imam Masumin alayhi salam, the rest of his creations were created. When you understand that from the essence of Allah, the essence of Rasulullah, then Imam Masumin alayhi salam, and the rest of his creations, we ourselves are also the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, so therefore there is a little bit of part of this essence inside of us as well. And that little bit of the part of essence that is inside of us requires and demands complete and absolute obedience to Rasulullah, to Imam Masumin and Anbiya alayhi salam. The discussion of light or nur is a discussion that requires a person with the piety, with righteousness, with knowledge, with a spiritual place in front of Allah subhanahu wa ta'ala, requires that person to be a certain type of person in front of whom the discussion of light should be narrated, so that the person can understand that and not come to the conclusion that we have become to. And about 600 years ago or so forth, when the azan of Imam Hassan was allowed that it should be done in public, as we have the procession that we will all participate inshallah tomorrow, that was not allowed before. Once it became public, the public were able to commemorate the martyrdom of Imam Hassan, and that the minbar was to be given to those individuals who can come and narrate the Masa'ib of Ahlul Bayt alayhim salam, and also narrate the Fazail of Ahlul Bayt alayhim salam. They took upon themselves the duty to have them explain to people in the light of nur. And the light of nur or essence was a discussion that should have been maybe done after 1,000 years. That if you were to start off people from the grassroots and then took them step by step in knowledge, in piety, in righteousness, into those spiritual places that a person should get to so that they are able to comprehend this discussion, that was not taken. So therefore now you have in the majalis of Imam Ali alayhi salatu wasalam, you will have the discussion of light or nur or essence discussed among those individuals who might have an issue performing the basic rulings of Islam. कभी मौलाना वज़ू करने आ जाए ना, तो वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं कि ना जाएं, कि जहाँ पे मौलाना वज़ू कर रहे हैं कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो वज़ू कर रहे हैं वो कहीं पे मौलाना देख लें, और देखने के बाद कहीं वो ये ना कह दें कि जिस अंदाज में आप 60 साल से वज़ू करते आ रहे हैं उसके अंदर इश्काल है। या अगर किसी से कह दिया जाए कि if you can lead the prayers or if you can pray in front of us, they will not take that opportunity because they have this inner fear that if they were to recite Surah Al-Hamd, that there might be the issues of makharij, the pronunciation, it might have the issues of the accent, it might have issues as far as the rules of tajweed are concerned, they might have issues what they are going to be, how they're going to be performing the ruku, how they're going to be performing the sajda. They also have maybe the issues when it comes to najasat and taharat. A lot of the people do not understand the purity that is required and what is impure. The basics, the grassroots things we did not accomplish, but we gave the ideas that are so enormous and so complicated that not a regular person can comprehend how Imam Ali ﷺ will be able to divide heaven and hell, and also be an individual who is going to go into the marketplace, walk on the street, and be an individual who's going to sit down and eat, and be an individual who's going to have kids, be an individual who's going to have a wife, an individual who's going to live among the people
and do the duties that regular people perform, and became an issue. And therefore, in our ideology, we took a few things without knowing, without understanding, but accepted them and became convinced on that. All of the fazail of Imam Ali that are ever narrated from this mimbar or are ever going to be narrated by anybody, you can accept them to be true. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के खुतबे के अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान किए और बयान करके ये कहा कि इमाम के फजाइल इतने ज़्यादा हैं कि मैं उन तमाम के तमाम फजाइल को इस खुतबे के अंदर बयान नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा फजाइल हैं कि मैं इस खुतबे के अंदर बयान नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स आए और तुम्हें बताए कि ये अली की फजीलत है, उसको कबूल करना। इतनी फजीलत है ताकि क़यामत कोई शख्स भी जिस तरह से इंसानियत आगे बढ़ती है उसका शऊर बढ़ेगा और फजाइल इमाम अली अलैहिस्सलाम के उनके सामने मुनक्किस होंगे, उनके सामने उनकी समझ में आएंगे। जितना भी इंसान अपनी सोच की गहराई से जितना भी चाहे इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ निगाह करे, जितने भी वो फजाइल बयान कर सकते हैं वो कम है। So now what happens is that when you try to get people to the grassroots, to those things that are required as an obligation as a Muslim to perform, people get this idea that mashallah, this person is against the fazail of Imam Ali alayhi salatu. When in reality nobody can be against the fazail of Imam Ali alayhi salatu. How can you be against the fazilat, the goodness of patience? अगर कोई ये कहता है कि आप इमाम अली के फजाइल के मुनकर हैं, इसका मतलब क्या है? That you deny patience, that you deny knowledge, that you deny forbearance, that you deny mercy, that you deny all of the traits of Allah subhanahu wa ta'ala. How can somebody deny the traits of Allah subhanahu wa ta'ala and still call themselves as a Muslim? Is it possible? It's not possible. The characteristics, the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala that was embodied into the character of Imam Ali alayhi salatu, no human being, whether the person is Muslim, Jew, Christian, Hindu, cannot deny it. Therefore you will see that there are many poetries that are written in the fazilat of Imam Ali alayhi salatu by Hindus. There are so many poetries that are written by non-Muslims. There are books that are written by Christians. There are books that you will find that are narrated by Jews. You will find that those individuals who don't even believe in a God, they cannot deny the history that Imam Ali ﷺ had. Nobody can deny it. So how is it, किस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई शख्स मुकस्सिर हो गया है? ये जब क्योंकि आप सब जमा हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर तौफीक देगा तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बहस करनी ज़रूरी है। हम आजकल हमारे पास, and I will translate that in English as well for our youths too, we have a labeling machine. Especially those individuals who have worked in retail, you know, they have a labeling machine, a pricing machine. होता है ना, प्राइस मशीन होती है आपके हाथों में, आपका जो दिल चाहे आप उस चीज़ की कीमत नहीं लगा सकते, हालांकि मशीन आपके पास है। ऐसा होता है या नहीं? People who have worked in retail, come on, give me some, right or no? You have the machine that can price out whatever you are going to put on it, but you cannot put the price on whatever you like. कि अगर एक चीज़ है आपका दिल चाह रहा है कि आप आज उसको $100 की कर देंगे, नहीं कर सकते। अगर वो $1 की चीज़ है तो आप $1 की प्राइस टैग लगाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि चीजों की कीमत के हवाले से कोई है जो आपको बताता है किस चीज की क्या कीमत है। कोई है जो बताता है कि इस चीज की क्या कीमत है। हर शख्स का जिसका दो दिल चाहे वो उसकी कीमत नहीं लगा सकता। Somebody, a body or a person has to be there to let you know what is the price of something, and whatever that being tells you, you are obligated that you have to put the price of that what is told to you. So what is the price of Imam Ali? Who's going to put that price on Imam Ali alayhi salatu wasalam?
कौन है जो बताएगा कि अली कौन है, अली की कीमत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे ना। हर शख्स अपना जो उसका दिल चाहे वो नहीं कर सकता। ना हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के दर्जे में गुलू कर सकते हैं और ना ही इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस तरह से पेश कर सकते हैं कि लोग कहें कि अली और आपके दरमियान में कोई फर्क नहीं है। And it's the same thing for the Holy Prophet as well. You cannot just, for whatever sake you think that the Prophet is, you cannot put that the price of the Prophet as such or the status of the Prophet as such. You have to understand that the price of the Prophet is going to be narrated and told to you by the creator of the Prophet. So आजकल, nowadays we've got all these price machines inside in our hands. हम जिसको देखते हैं, अच्छा ये तो मौलाई है, उसका टैग लगा दिया। एक और शख्स को देखते हैं, ये तो इनकलाबी है, उसको टैग लगा दिया। एक शख्स को और देखते हैं, कहते हैं ये तो मॉडर्न मुसलमान है, उसको उसका टैग लगा दिया। अब आप अगर देखें कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों पे लेबल लगा होता है या नहीं? इसी तरह से हम सेंटरों पे भी लगाते रहते हैं। We also put that on the center. This center, our price, our machine, our label machine is saying what? This center is such and such, this center is such and such, this center is such and such. Who has given us the right? किसने हमें ये हक दिया है? अगर हक है आपके पास, तो उस प्राइस टैग को, उस मशीन को अपनी तरफ करें। Take that label machine and put that label that you know your own self, who you are, whether you are a hypocrite, whether you are a mu'min, whether you are a Molai, whether you are an inqlabi, whether you are a liberal. Find out who you are. And put that label on your own self. You have the right to do that, but you have no right to put the label on someone else that you do not know because you feel like you want to put the label of a Rawaiti, of a Molai, of an Inqalabi, of a liberal. You do not have the right. Nobody has the right. The right is going to be given on the day of judgment to Allah subhanahu wa ta'ala when He judges all of us. Right? And the other thing is, when we don't even know what a Maulai is, how can we put the label? हमारे लिए मौलाई क्या होता है? कि मसलन जो मातम अच्छा करता है, जो मनकबत अच्छी पढ़ेगा, जो कसीदे अच्छे पढ़ेगा, है? जो है वो नंगे पाँव आएगा जुलूस में शिरकत करेगा, जो मातम करेगा, हम कहते हैं ये मौलाई। जो दो हाथों से मातम करेगा, जो नारे लगाएगा, right? साथ है ना मेरे? Isn't that what we classify? Right or no? So somebody who does not do that, that means मौलाई नहीं है। मौलाई की आज तारीफ करते हैं जो हमें अहादीस से मिली है, जो हमें इस्लाम की निगाह से मिली है। कर दें? जब तारीफ कर देंगे उसके बाद भी हक नहीं के लेबल लगाएं। Even after giving you the definition of who a Maulai is, you have no right to take that label and start putting on people. Maulai is like, the ya here is for telling you where that person is from. When you say Ummi, you say Najafi, right? You have Radawi, hai na yahan pe mashallah. You have Naqavi, you have Taqavi, you have Musavi, right? So this ya that is coming there is showing, it's telling you where this person is from or who this person belongs to or what is the origins of that person. What is the root of that person? When you say Maulai, a Maulai is that person whose roots is in the master that he is calling. मौलाई यानी उसकी असल जो है वो किससे निस्बत है? वो मौला से है। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक जड़ लें, उस जड़ से जो निकलेगा वो सब का सब जड़ के अंदर है, वो बीज के अंदर है। तो मौलाई कौन होगा? जिसका कौल और फेल और जिंदगी के हरकत और सकनात हर एक चीज निस्बत लेगी मौला के साथ। वो मौलाई होगा।
कि जिसको की निस्बत दी जा रही है, अगर वो बोलेगा तो अपने मौला की तरह बोले, अगर वो चलेगा तो अपने मौला की तरह चलेगा, अगर वो अपनी जिंदगी की किसी अमल को अंजाम देगा, if he is going to perform any action in his or her life, will be like the action of his master or her master. That's a Molana. That his essence is with his master. Now, if I am saying I am Molai and my actions are nothing to do with my root, then I'm not a Molai. Right or wrong? भाई लफ्ज़ है ना, जैसा आपको मौलाना का नहीं था पता, हमने कल बताया आपको, मौलाना यानी हमारे मौला, सही? तो जो मौलाई है वो शख्स हो सकता है जिसकी असल जो है, रूट जो है, जो बीज है उसका, वो मौला के साथ निस्बत रखता है। और जब वो निखरे, जब वो बड़ा हो, जब वो उसकी कदो कामत बढ़े, जैसे जैसे वो बढ़ता जाए, तो जो दरख्त नजर आए, उस दरख्त से आपको शबाहत उसके मास्टर की नजर, ये शख्स होता है मौलाई। अब क्योंकि तारीफ आपको दे दी गई, अब लेबल किस पे लगाना है? अपने आप पे, ठीक है? उसके बाद जो इनकलाबी होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनकलाबी यानी कल्ब यानी दिल, इनकलाब यानी जिसका दिल जो है वो दगरगून हो गया हो। The person whose heart has had a revolution, and the revolution is such that if on his heart before there was the government of shaitan, now the government of Allah is on it. इनकलाबी कौन होता है? इनकलाबी वो शख्स होता है जिसके नफ्स के ऊपर हाकिम अब शैतान नहीं रहा बल्कि अल्लाह है। अगर नफ्स पे किसी के अभी भी हाकिम शैतान है, शाह है, तो वो इनकलाबी नहीं। जिस दिन उसके अंदर तहव्वुल पैदा हो, the day that he gets a revolution inside and he changes the government from an oppressive regime into the government of justice, then that person inside is an inqalabi. जब तक उसके नफ्स पे शहवात की हुकूमत है, जब तक उसके नफ्स पे हसद की हुकूमत है, जब तक उसके नफ्स पे किब्र की हुकूमत है, जब तक उसके नफ्स पे हुब्बे दुनिया की हुकूमत है, जब तक उसके नफ्स पे बेसब्री की हुकूमत है, वो शख्स इनकलाबी नहीं हो सकता। That person is not a person that can be called an inqalabi. So now if you go with that definition, you have to look inside of yourself. तीसरी जो हम लेबल लगाते हैं वो किस चीज का है? मैं तो मॉडर्न मुसलमान हूं, यानी जो मॉडर्न मुसलमान है वो कदीमी मुसलमान है। अगर सोचा जाए, if you think about it, I'm a modern Muslim, so who am I? I didn't think that there is a different kalma for a modern Muslim. एक मॉडर्न मुसलमान का कोई सेपरेट कलमा होता है? भाई तुमने भी कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अली वलीउल्लाह, मैं भी कह रहा हूँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो, मैं भी वही कह रहा हूँ, हम दोनों का कलमा एक है, तो फिर मॉडर्न कहाँ से आ गया? No, we are actually more advanced and we are more civilized. We know things better than other people do. We know religion better than those people who are the scholars of religion. हमें तो भाई क्या मुसलमान, आपने ये बात बताई है कि ये तो